post-pandemic time. So what expectation do you have when you come to China to attending the opening ceremony of Winter Olympics? What's your expectation of it? Well, firstly, this is the first Olympics, let alone it's a winter one, but it's the first Olympics I will be ever witnessing. So I look forward to that. And of course, you know, I was a sportsman for almost 20 years of my life. I was an international sportsman. People in China don't play cricket. I'm hoping that as our relationship gets stronger, we will also teach Chinese how to play cricket so that, you know, China can also become a great cricketing team. But I look forward because, you know, it's as a sportsman, it's apart from our relationship, close relationship between the two countries. It'll be very interesting for me to see a competition. Ever since I have been in politics, I have had no chance to watch any sports. Yeah. So, what do you think the Winter Olympics means to this post-pandemic era? I think it's a very, you know, pandemic has devastated. Apart from anything else, it's sporting events all over the world have been affected by the pandemic. So in this context, I think it's a very for China to have gone through with the Winter Olympics. I think it's very admirable. अस्सलाम वालेकुम जनाब वज़ीर आज़म साहिब, मैं हूँ शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की उर्दू सर्विस की जोशु ख्वा। जैसा कि आपको इल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट मोहम्मद करीम वो बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हम इन मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ी की शिरकत का बहुत खैर मकदम करते हैं। आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खेलों के ताउन को फ़रोग़ देने में क्या इक़दामात करेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और कई पख्तूनख्वा के भी इलाके ऐसे हैं कि वहाँ स्कीइंग के लिए, और स्कीइंग मेन चीज़ है विंटर ओलंपिक्स की, तो स्कीइंग के लिए बेहतरीन जगह हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमने कभी सही माने में स्कीइंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी। बड़ी कम जगहों के ऊपर स्कीइंग होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे स्कीइंग को डेवलप करें, और उसको जब डेवलप करेंगे तो हमारी ये भी कोशिश है, क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है विंटर स्पोर्ट्स की तरफ, तो हम सोच रहे हैं कि उनसे फिर कोलैबोरेशन भी करें, क्योंकि दूसरी तरफ खुजराब पास की दूसरी तरफ चाइना है और ये कनेक्शन भी उनसे है। तो हम इसके ऊपर भी अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले तो वैसे स्कीइंग के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें, और दूसरा उधर से कनेक्शन गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के अंदर, उधर भी हम स्पोर्ट्स के अंदर आपस में ज़्यादा मिलाप करवाएं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करें। Thank you, Your Excellency. It's Brody Jiang Chao with Xinhua News Agency. So my question is that you praised China's development model on many occasions. And we know that China has developed a whole process, people's democracy, and committed to a people-centered approach. However, the United States and the Western countries try to impose their democratic model to other countries. So my question is that how do you think of China's whole process, people's democracy? Thank you. The most impressive thing about China, which is accepted by the entire world now, is that the number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35, 40 years. It's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they are on the other side, they sort of oppose China, but everyone has to accept
that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. And so, you know, when I went to China, I specifically wanted to know the steps taken for alleviating poverty there. And so the reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate is because, you know, it was an inclusive growth in China. When China grew, the whole population grew with China. It wasn't, unfortunately, you know, like in a lot of the rest of the world where the rich get richer and the poor, in fact, get poorer. The gap between the rich and poor gets wider. In fact, in pandemic, we discovered that the poor people got poorer and the super rich got even richer. And so China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. सर मेरा ताल्लुक़ FM 98 दोस्ती चैनल से है। जैसे कि हम जानते हैं आप हमेशा खेलों और वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी बरकरार रखते हैं। इस हवाले से आप चीनी आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? चाइना के अंदर ये जो हमने देखा है कि एक तब्दीली आई है चाइना में। एक तो लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर चाइना कभी भी इतना आगे नहीं था दुनिया में जितना अब पिछली 2-3 ओलंपिक्स में चाइना की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है। तो इससे वाज़े होता है कि वहाँ बड़ी तवज्जो दी जा रही है अब स्पोर्ट्स की तरफ और फिटनेस की तरफ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्याती हिकमत अमली को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक की तरफ मुंतकिल कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन पाकिस्तान स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी ताउन से आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? देखिए, चाइना ने गुर्बत कम कैसे की? चाइना ने गुर्बत ऐसे कम की कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया। जो ग्रोथ रेट जैसी जैसी उनकी बढ़ी तो उन्होंने उस ग्रोथ रेट से लोगों को गुर्बत